because of the quality of these. Ow, thumbnail le liya. Why am I so excited today? Hi guys, how are we doing today? I hope you guys are safe and sound, and yes, if you read the title of this video, it is an Urbanic haul. Finally, we have shopped quite a few items from Urbanic. I'm super excited to show all of the clothing items, the jewelry pieces, everything to you guys. So I've been meaning to shop from Urbanic from a really long time, but वो हो नहीं पा रहा था for some reason. But then I did it, and if you ask me their prices and quality and everything, I would say it's comparable to Shein, but then Shein was much more cheaper, bro. It is like the items are really trendy, the pieces are really good, but the prices are not that affordable जैसा Shein में था. I miss Shein so much. But yes, without further ado, let's dive into my haul and I'm gonna show you everything in detail. So let's begin. अच्छा, तो मैंने ना सारा कुछ एक या 2 ऑर्डर्स में मंगवाए थे, एंड ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पैकेजेस को. दे डोंट सेंड द होल थिंग एक बारी में, एंड डिलीवरी वाज सुपर फास्ट फॉर द आइटम्स दैट हैड 2 to 3 days डिलीवरी रिटन उसके आइटम के साथ में ही. उनमें तो 2 to 3 days में यू विल गेट द प्रोडक्ट, एंड जिसमें इट्स रिटन लाइक 7 to 9 days और वट एवर जो लिखा होता ना, दे स्टिक बाय इट. सो डोंट वरी अबाउट द डिलीवरी एंड एवरीथिंग. COD इज अवेलेबल, सो thank God. Starting up with the first item. Don't judge me, it's super hot in summers, but it's this sweater क्योंकि अपने को पहाड़ में जाना है and I really wanted a bright sweater. So जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऐसे ziploc bags में आते हैं सारे products, so it's super secure also. And I got this mustard yellow knitted sweater, and it looks like this. It's a cropped sweater, very bright, a very nice looking, quality is amazing, and it's very soft, it won't like hurt your skin. And इसमें बहुत सारे colors available थे. There was lilac, there was red, black, brown. You can select your own colors. I wanted yellow because when you like go out and travel करते वक्त अगर पिक्चर्स में आप अगर ज़्यादा ब्राइट कलर पहनते हो तो अच्छी आती है पिक्चर्स. अगेन डोंट जज मी, बट मैं सारा कुछ ना कपड़े अपने आजकल पिक्चर्स सोच के खरीदती हूँ फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो, मे बी मैं थोड़ी हो गया ये ऑनलाइन वाला फीवर कुछ ज़्यादा ही. बट या आई थिंक द कलर इज़ वेरी प्रिटी, इट विल सूट मी. एंड ऑल्सो इट हैज़ बलून स्लीव्स गाइज. जस्ट लुक हाउ क्यूट. मेरे डोले इतने बढ़ गए हैं ना कि मेरे को बलून स्लीव्स की ज़रूरत है. Jokes apart, we have gained quite a few क्योंकि लॉकडाउन है, but we can't help it. मतलब लॉकडाउन है. I am here to thank my body to sustain, and it's healthy and it's like growing. I am proud of you. कोई बात नहीं, we'll get fitter, and रोज़ वर्कआउट तो चल ही रहा है अपना. आप इंस्टा पे डेली डोज ऑफ मोटिवेशन चाहिए तो मेरे को फॉलो कर लो, बिकॉज आई पोस्ट अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव कंटेंट देयर. सो या सेल्फ प्रोमो डाल दिया मैंने यहाँ पे हैंडल. ओके, सो नेक्स्ट आइटम आई हैव इज रियली क्यूट, एंड ये बिल्कुल ऑपोजिट है वो वाला. दैट वाज फॉर विंटर्स एंड दिस वन इज फॉर समर्स. एंड ये मैंने अपने गोवा वेकेशन को प्लान करते हुए मंगवाया था. इमेजिनरी गोवा वेकेशन, जो कॉलेज के टाइम से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो वाला गोवा वेकेशन. सो दिस इज़ अ बैंडू टॉप. आई थिंक ये अच्छा बहुत क्यूट लगा है. इसके ऊपर अगर आप डेनिम जैकेट पहन लेते हो इन दिल्ली ऑल्सो, अगर आपको ऐसे पहनना है, एंड इफ यू कंफर्टेबल वेयरिंग इट एनीवेज, तो फिर तो you are amazing. Delhi में maybe I won't wear it like this. I will wear a denim jacket over it. But गोवा अपन जब जाएंगे ना तो मचा देंगे. This is very cute. Like मतलब ये अच्छा, the sweater was for something around 800. This is for something I think 350 or 400 rupees. 400 rupees वाला है नहीं वैसे इसमें कुछ, but क्यूट है. मतलब आई लव सनफ्लावर्स, तो मेरे को बड़ा क्यूट लगा. इसमें से टाई अप सा भी है ऊपर, सो यू कैन टाई इट अप एंड रॉक इट बेब. नेक्स्ट अप अगेन ट्रैवल प्लान्स देखते हुए मंगवाया गया था. इट्स सुपर ब्राइट एंड नॉट अ लॉट ऑफ
if you guys would like it, but I love it and it'll look great in pictures. It is this very bright, abhi na light mein samajh nahi aa raha, this is very bright pink, neon pink and orange and white ka tie-dye type ka top, and it has a V-neck and has a wrap around thingy here, which is super cute. Again, I am all in for that extra stuff in clothing items. So yes, it's full sleeves and you can wear it in winters, you can wear it in autumn, but not for summers for sure. So yes, I absolutely love it. This one I got for 750 rupees, and yes, the fabric is nice and very soft, so no regrets. Okay, so the last clothing item that I got is amazing. I am already in love. It's this very beautiful ripped straight legged jeans. बहुत अच्छा है ये. Like this is very long also, and मतलब generally ना I'm 5'6", 5'5", 5'6" ही बोलती हूँ मैं generally लोगों को. तो जो jeans होती है ना वो मेरे बहुत ankle से ऊपर हो जाती है, तो I don't really like it. But this one is like perfect length. लाइक एंकल पे के नीचे तक जाती है ये, एंड थोड़ा सा मतलब आपका थोड़ा सा जूता दिखेगा, एंड रेस्ट द लेंथ वाइज इट्स so good. It looks so cool if you wear it. It has a ripped right here. My mom hasn't seen it yet, so I'm gonna be dead after she watches this because उनको ripped jeans बिल्कुल भी नहीं पसंद for some reason. I don't know parents को ripped jeans क्यों नहीं पसंद होते. They are like फटे हुए कपड़े पैसे देख के क्यों खरीदना है. कितने कूल लगता है फटे हुए कपड़े. डोंट यू गाइज अग्री? आई मीन आई लव रिप्ड एवरीथिंग. So this one again, it's pure 100% cotton, so no stretches there, and it is you know that material जो वो heavy jeans thick material नहीं होता जो Zara वाली jeans होती हैं, उस टाइप का material है. So absolutely loving it. इसमें एक मेरे को थोड़ा सा fault लगा था कि इसका keyhole was like attached थोड़ा सा, तो इसका बटन जा नहीं रहा था, but I cut it and it's fine now. Amazing piece. Love this. I think I got this for 1200 or 1300 rupees, which is absolutely worth it. तो अब ये थे मेरे क्लोथिंग आइटम्स. वन थिंग आई वांट टू से इज अर्बैनिक इज नॉट एट ऑल साइज इंक्लूसिव. अगर आप लाइक दिस जीन्स वाज एक्सेल साइज का, एंड अगर आप मेरे से ज़्यादा साइज में हो तो डोंट एट ऑल लाइक डोंट गो फॉर जीन्स. आपको आपके साइज का होगा ही नहीं. आई डोंट नो व्हाई डू दे डू दिस, बट आई थिंक दे शुड बी मोर साइज इंक्लूसिव, एंड प्लस साइज के भी और आने चाहिए यू नो जीन्स में, जॉगर्स में एंड टॉप्स में वैरायटी, जो कि अभी नहीं है. सो अर्बैनिक प्लीज़ fix this, otherwise you are great. Okay, so now next up we have all my jewelry that I got from Urbanic. First up I have this set of two neck pieces which are like really pretty. One is this moon, half moon sort of a thing in bluish sea green color, and other one is this sun pendant. You can layer them up. They come both अलग-अलग, and for the quality I won't say it's great because मैंने ये एक दो बारी पहना है and ये ना थोड़ा black हो चुका है already. To prevent this you can you know spray it with some transparent spray, but hardly matters. ये हो ही जाता है eventually, सारे कलर फेड हो जाता है इनका. So it's like winters में it's okay because हाई नेक के ऊपर पहनते हो आप तो इतना नहीं होता, but then it gets in touch with your skin no, तो color is bound to fade. So not that great, but then it's okay for the price. Then next up I got a lot of छोटू earrings which are like very aesthetic by the way. मतलब मेरे को इतना expected नहीं था कि इतना अच्छा होएगा, but these are like really nice and pretty, and here are some of the, I don't think you can see, but मैं पहन के दिखा दूँगी. Like these are really pretty. One of them is looks like this, like really pretty. Then we have an evil eye and everything. So again very cute. This one I think was for 200 rupees. The whole like बहुत सारे mix and match कर सकते हो अब इसमें sets, like I think 10-15 तरीके के different earrings हैं. They are not in set, so दोनों different कानों में different earrings हैं. So there's that, and I think it's quite cool, like एक कान में दूसरा एक कान में. Then next up I have this really pretty bracelet. ये मैंने अभी तक पहना नहीं because of how pretty it looks. So this is how it looks. It has an evil eye and a gold chain, and it's really cute and really pretty.
This one, I think, again, something around 200. All of the jewelries that I got are around 200-ish range ka hi. The next step, I have another very, very pretty and dainty neck piece. It is sort of a moon, half moon jaisa hai ye, and this is like tangled, really nice and pretty. This is how it looks, and would really look nice with, you know, deep neck wale jo tops hote hain. Amazing, amazing. Again, I'm not sure about the quality because it's just for 100 rupees, so you can imagine quality itna acha nahi hoega. Then the last jewelry item is this layered neck piece. So I initially thought that ye alag alag aayenge, but it's like a same neck piece, so I can't really wear them separately. I have to wear it all together. It's silver in color, and let me just untangle it. Why is my life like so tangled? अभी कल मैं 1 घंटे तक फेरी लाइट्स अपने अनटैंगल कर रही थी, एंड नाउ दिस, लुक, व्हाट इज दिस? One eternity later. Okay, whatever. मैं आपको यहाँ पे snippet डाल दूँगी. This is how it looks. It has a lot of chains, and यहाँ पे एक bowl जैसा बना हुआ है. There's this moon. There's lightning वाला thingy. You know, अगर ये अलग अलग होता ना, it would have been such a piece, like 5 pendants, and all of them are like really beautiful in design. I don't know how would it look like if I like wear them all together. मैंने इसे जिंटा से नहीं लिया था कि मैं इसको एक साथ पहन लूँगी. But yeah, I'll insert the clip here so you can let me know. Also, the jewelry items are non-returnable, and some of the items इनके नीचे लिखा होता है कि इनका return period क्या है, तो keep that in mind. Yeah, that is about it. I hope you like this video, and I make a lot of hauls, so you can check out my channel. I'll link some of them in the description box below. And thank you. Thank you so much for watching this. I am eternally grateful for your time, and subscribe kar lena. Follow me on Instagram if you want to. I post a lot of content there, and yeah, please stay safe, stay healthy, stay happy, and I love you. Bye.